Jai Hind student, welcome to biology class. So students, now in this lecture today we will discuss the important 2 marks questions of the chapter life processes. So let's start. Now the first question is, name 2 different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organs. And the second part of this question is, write any 2 differences between the 2 ways of oxidation of glucose in organism. Now you can see also this question is asked in 2008 and 2011 also. Now the 2 different ways in which glucose is oxidized, that the 2 ways are aerobic and anaerobic respiration, as you all know. Okay, now the next part is you have to write the differences between these two. Okay, so let's see the differences. Aerobic respiration, there is complete breakdown of respiratory substrate with the help of oxygen, the product being carbon dioxide and water. Now anaerobic respiration में there is incomplete breakdown of respiratory substrate due to non-use of oxygen with at least one product being organic. Now, in anaerobic respiration, I hope you all must be remembering कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और इथाइल अल्कोहल बनता है. ओके, इन केस ऑफ लोअर एनिमल्स और मसल्स की बात करें तो लैक्टिक एसिड बनता है. इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि वन प्रोडक्ट बीइंग ऑर्गेनिक. Now the next difference, it can be energy. Aerobic respiration, it forms 38 ATP molecules. Okay, so 38 ATP molecules energy is generated by the oxidation of one glucose molecule. Okay, now anaerobic respiration, it only forms 2 ATP molecules, okay, per glucose molecule. So you can compare the energy production. In aerobic respiration, a huge energy production is there as compared to anaerobic respiration. Now the next question is, what is the function of trachea? Why do the walls not collapse even when there is less air in it? Now trachea is a tube, windpipe, okay, that connects pharynx with lungs, and it carry air to and from the lungs. Okay, so that is the function of the trachea. Now trachea is lined by ciliated mucus secreting pseudostratified epithelium for trapping dust particles and microbes. ना जो ट्रैकिया होता है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस इज़ बेसिकली फॉर ट्रैपिंग द डस्ट. जो एयर के साथ अगर कोई भी डस्ट आ रहा है तो उसको वो वहीं पे ट्रैप कर लेता है. ओके, सो दो फंक्शंस है ट्रैकिया के. एक तो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको अंदर नहीं जाने देता है बॉडी के. सेकेंडली जो है इट कनेक्ट्स फेरिंग्स विद लंग्स फॉर कैरिंग एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स. ठीक है, एयर जो है लंग्स को ले जाना और लंग से वापस लाना. ओके, दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन. नाउ वाई do not collapse? ट्रैकिया जो है इट डज नॉट कोलैप्स इन रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑल्सो. ओके, बेसिकली एक्सलेशन जब हम बात करते हैं, ओके, तो इन दैट केस ऑल्सो द ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इन एब्सेंस ऑफ एयर. It is due to the presence of C-shaped cartilaginous rings. C-shaped, अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो तो उसमें C-shaped cartilaginous rings होती हैं. Okay, let me just rewind you. Okay, now this is suppose trachea. तो इसमें इस तरह से rings बनी होती हैं C-shaped. Okay, these are the cartilaginous rings. Okay. So I hope you all have understood. Now next move on to the next question. Name any 2 digestive enzymes secreted in the human digestive system and write their functions. Now any 2 digestive enzymes here you can write, because as there are many digestive enzymes you all have studied. So here like I have written salivary amylase, that is also known as ptyalin, and the second one is your pepsin. Okay, these are the 2 digestive enzymes I have written, and now you have to write their function also. Now starch, what is the function of this salivary amylase? It acts on starch. The first thing is that the salivary amylase or ptyalin, it acts on starch,
and it changes starch into maltose and dextrins. ओके, और यू कैन से सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है. ओके, बिकॉज स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. नाउ now pepsin, it acts on protein. Now it changes protein into peptones and proteoses. Okay, ये भी प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है. ओके, so this is the function of the two digestive enzymes. Now moving to the next question, how do they take up carbon dioxide and perform photosynthesis? ना प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. सो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग नाइट व्हेन स्टोमेटा आर ओपन. It is fixed in malic acid form, which the same is released during the daytime for performing Kelvin cycle in night. Now what happened during night? You will be studying, आप आगे पढ़ोगे कि दो तरह की साइकिल्स चलती हैं. ओके, जो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है. ओके, उसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस. ओके, लाइट रिएक्शंस जो हैं ग्रेना पार्ट में होते हैं और डार्क रिएक्शंस जो हैं स्ट्रोमा के पार्ट में होते हैं. आई होप यू ऑल रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ओके, उसमें ग्रेना और स्टोमा होते हैं. तो लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन बेसिकली जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं. यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एसिमिलेटरी पावर्स. वो उन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है जो कि यूज़ होती हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज, जिससे ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, प्लांट फूड का सिंथेसिस होता है. तो एसिमिलेटरी पावर के फॉर्म में एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एनएडीपी. ठीक है, ये दोनों जो हैं एसिमिलेटरी, एनएडीपी, H+H+ जो है, ये दोनों एसिमिलेटरी पावर्स जो है लाइट रिएक्शन में ये दिन के समय बनती हैं. रात में क्या होता है कि बिकॉज देयर इज़ नो लाइट बट स्टिल द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन इज़ यूज्ड. सो ये दोनों जो हैं यूज़ होते हैं डार्क रिएक्शन में. ओके, और ये जो है कैल्विन साइकिल जो कि ऑपरेट होती है. ओके, दिस अकर्स इन स्ट्रोमा ओनली. और ये जो है इसमें इन दोनों का यूज़ होता है एंड ग्लूकोज इज़ फॉर्म्ड. ओके, दिस इज़ हाउ this carbon dioxide is taken and then the photosynthesis occur. Now next, what will happen to guard cells and the stomatal pore when water flows into guard cell? How do plants transmit information from cell to cell? Now guard cells, they swell up and the stomatal pore is created in between them. ओके, सो व्हाट हैपन टू द गार्ड सेल एंड द स्टोमेटल पर, जब वाटर जो है एंटर होता है गार्ड सेल में तो गार्ड सेल स्वेल कर जाते हैं और जो पोर होता है वो क्या हो जाता है, वो पोर जो है इट इज़ क्रिएटेड इन बिटवीन देम, वो ओपन हो जाता है. ओके, हाउ डू प्लांट्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल? इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड from one plant to another through plasmodesmata and hormones. Now प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं बीच बीच में, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. इससे जो है क्या होते हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं वो जो है ट्रांसपोर्ट उनका होता रहता है वन सेल टू अनदर सेल. ओके, और साथ ही साथ जो है प्लांट्स में हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए. ओके, दैट यू हैव स्टडीड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हमने देखा था हार्मोन्स का रोल. ओके, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन, हाउ दे परफॉर्म. So this how they transmit the information. So these are the few questions. Hope you all have understood. Thank you everyone.